This is NDTV, and you're watching NDTV 24/7. मेरी पहचान, ये है मेरी पहचान। Nizamuddin, South Delhi, one of the major clusters of homeless people in the capital. Tonight, an attempt to reach out to some of them, to those who have not yet enrolled for the unique identification number, Aadhaar. In July, the Delhi government initiated its first ever project to survey the homeless. Those surveyed receive a beggar or homeless card and are enrolled for Aadhaar. Neither the government nor NGOs have the basic database of homeless people in Delhi. So Mission Convergence first made it mandate to conduct this survey throughout Delhi. Till now we have only covered 40,000 of homeless in Delhi, and we are expecting to cover more than 1 lakh. We go to these pockets, then we map the people who are sleeping in the night. It provides us with the data that what is the density rate in that area. So for example, in Nizamuddin area, the forms which were filled are more than 2,000. If it comes to be in high density areas, then we have to send more number of teams here for the survey process. There is lot of need to understand, the exact needs, the exact dimension, the vulnerability. It's a very, very complex, phenomena. We were opening night shelters in places where, there was very few occupancy because it was very far away from the working place. We started, conducting a survey to take into account the entire socio-economic characteristics of the family. Where they've come from, how long they've been living on the street, and also look at their family profiles, look at the vulnerability. So then the planning can be much better targeted. The Homeless Survey 2010 also includes street children who live in shelter homes. This one is run by the Delhi Metro Rail Corporation and Salam Balak Trust in North Delhi. हम लोग को भी ना बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है कि हम फटाफट इसको कंप्लीट करें तो बैगर होम जाएं किंग्सवे कैंप। तो अभी हमें आज कल हमारा लेटर जाएगा वहाँ पे, तो उसके बाद हमें सैटरडे तक या मंडे तक वहाँ पे शुरू करना है काम। उनके लिए एक बेनिफिट होगा कोई एक पहचान पत्र के द्वारा उसका वो उनका कहीं भी कार्ड चलेगा, जैसे हम लोगों का पहचान पत्र होता है, पेन कार्ड होता है, लाइसेंस होता है, वो उस तरह उनका कार्ड चलेगा। जन्म से छोटे छोटे बेबी होते हैं तब से ये लोग इनको रेलवे स्टेशन कहीं से इनको उठा के फिर ऐसे करके शेल्टर्स में छोड़ा गया। तो इनको ना अपना घर पता होता है, ना इनको अपने मम्मी पापा का नाम पता होता है, ना अपना एज पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। एक अनुमानित तौर पर इनके साथ ये कार्य हो रहा है। दिल्ली में तो इन लोगों के लिए स्पेशली अपने लिए फ़ाइट करके एक आइडेंटिटी लेना बहुत मुश्किल काम है।